हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे ओपन सीवी की जगह मैथमेटिक्स में। ठीक है। और थोड़ा सा पहले हम देखेंगे ये अपना चार्ट। ठीक है, ये वाला। बाकी हम जो वहाँ पे देख रहे हैं, मतलब हमारा जो AI वाला जो ओपन वाला है, ये जो मैंने बनाया है उसमें के तो टॉपिक्स लगभग लगभग कवर हो गए हैं। मतलब टॉपिक्स नहीं, numpy pandas matplotlib and cban मैटप्लॉटलिब numpy से तो हो गया था। वेक्टर मैट्रिसेस हो गया है, प्रोबेबिलिटी हो गया है, ग्रेडेड इंट्यूशन पढ़ना है हमें। और मैं इसकी जगह यहाँ से उठा रहा हूँ अभी। ठीक है, इस वाले से। और हमारा लीनियर रिग्रेशन सॉरी अलजेब्रा पूरा हो गया है। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये दो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है अभी तक। अब मैं चल रहा हूँ बढ़ने स्टैटिस्टिक्स की तरफ। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलस वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट बाद में कवर करेंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी। तो इसी एमएल बुक में हमारे पास मैथमेटिक्स फॉर एमएल एक बार चेक करूँगा, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्शन ये हम लोगों ने देखा हुआ है। लीनियर रिग्रेशन एक हमारे पास मैथमेटिक्स फॉर वो है ना, थिंक स्टैट करके, है ना। तो हो सकता है, देखता हूँ अभी दो में से कोई एक बुक चूज करने वाला हूँ अभी। या तो इसको उठा लूँगा, या तो फिर ये क्या है, अच्छा ये नहीं, इसमें तो कैलकुलेशन वगैरह जैकोबियन ऑफ मिक्सचर फंक्शन अभी दिखा रहा था ना रोड मैप पे। ये वाले में देखो, ये देखो जैकोबियन है ना, एशियन ग्रेडियंट चेन रूल कैलकुलस के अंदर का पार्ट है ये। ठीक है, तो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सॉरी स्टैटिस्टिक्स उठा रहे हैं अभी के लिए। तो थिंक स्टेट और एक बार इस बुक में भी चेक कर ले रहा हूँ। उसमें नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हमारा एक थिंक स्टेट एक बुक ये है। ठीक है, और स्टैट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रोग्रामर्स, और एक बुक और हमारे पास है यहाँ पे। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, उसके कंटेंट देखता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। इसी बुक को उठाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेटर बुक मुझको लगती है इसकी वाली, है ना। तो इसी को उठा रहा हूँ मैं। लॉ ऑफ नॉर्मल नंबर्स, सिंपल डेटा विजुअलाइजेशन। हाँ भाई, इसी बुक को उठाते हैं, ज़्यादा बेटर है। और बैकग्राउंड नॉइस किसी ने बोला था कम कर दीजिए, तो मैं उसको कम कर दे रहा हूँ। चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से एकदम। और रुक जाओ, पहले प्रीफेस देख ली, इंट्रोडक्शन कॉपीराइट ऊपर। चलो एक काम कर लेते हैं, पहले इंडेक्स देख लेते हैं क्या क्या है। स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स, what is statistics for the reading summary, statistics versus machine learning to culture।
मशीन लर्निंग, Gaussian summary stats tutorial overview, Gaussian distribution, sample test database, simple data visualization, random numbers, law of large numbers, central limit theorem, hypothesis testing. चलो इसको भी कंप्लीट करेंगे. Resembling, estimation, statistics, predictor. हम लोग पूरी पूरी इन लीनियर मतलब मशीन लर्निंग करने में मैथमेटिक्स वगैरह के पीएचडी करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है. सॉरी. चलो. इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स नोट्स वोट्स के लिए भैया निकाल लो अपना सब. तेरे रेडी भाई. अरे यार मेरी नोट्स इतनी दूर रखी हुई है. एक मिनट दोस्तों. हाँ सर. एक मिनट सर, एक मिनट. हेलो एवरीवन. सॉरी दोस्तों, मेरे साथ इस तरह की दिक्कत वगैरह आती रहती है. दिक्कत क्या है यार, थोड़ा सा काम वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, और भी काम वगैरह. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव क्लास. और जहाँ पे हम लोग जो आप देख रहे हैं वही पढ़ने वाले हैं. और अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कवर की है, उस पर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाए हैं. अभी और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोबेबिलिटी भी बनाएंगे. ठीक है, बट आगे कुछ और भी करना है, पढ़ना है, टॉपिक्स भी कवर करने हैं, तो उनको भी देखना होगा हमें. इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा. और यहाँ पे शायद कुछ थोड़ा सा दिक्कत है एक्टिवेट करने पर. ओ 239 239
थोड़ा सा रुक जाओ, 1 सेकंड और फिर मैं लाइव आ जाता हूँ। और ये डन। ओके ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, और ये स्टैटिस्टिकल मैथड्स, स्टैटिस्टिकल methods for machine learning. ओके दोस्तों, तो statistical introduction में is a collection of tools that you can use to get answer to important questions about data. You can use descriptive statistical methods to transform raw observations into information that you can understand and share. You can use inferential statistical methods to reason from small samples of data to whole domain. In this chapter, you will discover clearly why statistics is important in general, for machine learning, and generally the types of methods that are available. After reading this chapter, you will know statistics is generally considered as a field of machine learning. ठीक है भाई, प्रीरिक्विजिट है मशीन लर्निंग के लिए, फील्ड ऑफ अप्लाइड मशीन लर्निंग. We need statistics to help us transform observation into information and to answer questions about sample of observation. Statistics is a collection of tools developed over hundreds of years for summarizing data and quantifying properties of home domain given a sample of observation. फिर भाई required prerequisites in learning. Two tightly related fields of study, so much so that statisticians refer to the machine learning as applied statistics or statistical learning rather than the computer science centric name. Machine learning is almost universally presented to beginners. Assume that the reader has some background in statistics. We can make this concrete with a few cherry-picked examples. Take a look at the quote from beginning of a popular applied machine learning book titled Applied Predictive Modeling. The reader should have some knowledge of basic statistics including variance, correlation, simple linear regression. ये सब देखे हम लोगों ने पहले ही, p values and test statistics. Here's another example of even while and statistical data, but they are not information or knowledge. Data raises questions such as what is the most common or expected observation, what are the limits to the observation, on the observation, what does. अरे यार वाईफाई वाला दिक्कत फिर से क्या. हे गाइस, डेटा कनेक्शन बफरिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो जरूर कमेंट कर देगा कोई, या तो मैं देख करूं. Although they appear simple, these questions must be answered in order to turn away. Sorry. What is the most common observation? What are the limits on the observation? What does the data look like? Although they appear simple, these questions must be answered in order to run. नहीं अभी. Okay. These questions must be answered in order to turn raw observation into information that we can use and say beyond raw data.
We may design experiments in order to collect observations from these experimental results. We may have more sophisticated questions such as what variables are most relevant, what is the difference in an outcome between two experiments, are the differences real or the result of noise in the data. लक्ष्य लर्निंग भाई तुमने जो लोगो वगैरह अच्छा सर ठीक 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 भेजा है वो किस पर भेजा है टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप आर इम्पोर्टेंट what the variables are most relevant, what is the difference in outcome between two experiments, are the differences real or result of noise in the data, real or the results of noise in the data. Question of this type are important. The results matter to the project, to stakeholders, and to effective decision making. Statistical methods are required to find answer to the questions that we have about data. We can see that in order to both understand the data used to train machine learning model and interpret the results of testing different machine learning models. This is just the tip of iceberg, as each step in the predictive modeling project will require the use of a statistical method. Subfield of mathematics, it refers the collection of methods for working within the data and using data to answer questions. Statistics is the art of making numerical conjectures about puzzling questions. The methods were developed over several hundred years by people who were looking for answers to their questions. It is because the field is comprised of grab bag of methods for working with math. Art of making numerical conjectures about puzzling questions. It is because of the field is comprised of grab bag of methods of working with data that it can be seem large and amorphous to beginner. It can be hard to see the line between methods that belong to statistics and methods that belong to other fields of study. Often a technique can be both a classical method from statistics and a modern algorithm used for feature selections or modeling. Although a working knowledge of statistics does not require deep theoretical knowledge, some important and easy to digest theorems from the relationship between statistics and probability can provide a valuable functions. To example include the law of large numbers and the central limit theorem. The first aids in understanding why bigger samples are often better, and the second provides a foundation for how we can compare the expected value between samples. Mean values. When it comes to the statistical tools that we use in practice, it can be helpful to divide the field of statistics into large groups of methods. Descriptive statistics for summarizing data, and inferential statistics for drawing conclusions from samples of data.
spread of the data, the variance of standard deviation, descriptive distribution, so critical methods that can be used to visualize the samples of data chart and a useful qualitative both see descriptive distribution of observations as well as interferential statistics was a fancy name of methods that aid in quantifying properties of domain population from a small set of obtained observation called sample. See name for method that quantify properties. Commonly, we think of inferential statistics as the estimation of quantities from the population distribution, such as the expected value or the amount of spread. More sophisticated statistical inference tools can be used to quantify the likelihood of observing data samples given as assumption. These are often referred as the tools to where the description to the null hypothesis. There are many examples of these methods given the range of hypotheses we may constraint we may impose on the data in order to do the power effective to finding the test group for the machine learning practitioner has the traditional pragmatic focus on results and model skill above other concerns such as model interpretability. Statisticians work on much the same type of modeling problem rather than field studies of statistical and coming from mathematical background. They have some behavior of model predictions. A very close relationship between the two approaches to the same problem means that the both fields have a lot to learn from each other. The statisticians need to out all out in the classic to culture paper. Machine learning must also keep
an open mind and then both the imagine delivering complex stress. You will discover that machine learning is to describe learning of two closely respective statistical in the same problem after reading the learning. Statistics and statistical learning. When it comes to developing machine learning models in order to make predictions, there is a heavy focus on algorithms, code, and results. Machine learning is a lot broader than developing models in order to make predictions, as can be seen by the definition in this classic 1911 book of Tom Mitchell. Here we can see that from a research perspective, machine learning will rely on really the study of learning with computer programs. It just so happens that some of these learning programs are useful for predictive modeling problems, and some borrowed from other fields such as statistics. Linear regression is a perfect example. It is more than a century-old method from the time nascent statistics that is used for fitting a lineup in real validity. From a machine learning perspective, we look at it as a system of learning weights, coefficient in response to example from domain is what is using some calculation using the various field. And a pattern within data. The practice of pattern modeling defines the process and quantifying the model's prediction separation of future activities in data. Pattern modeling is providing the models with the ability of getting best possible results. With regard to some measure of model scale, the pragmatic approach often means that the results in the form of maximum scale or minimum error are sought at the expense of almost everything else. It does not really matter what we call the process. Machine predictive modeling. In some sense, it is marketing and group identification. Getting results and delivering values matter more to the practitioner. The process is statistical only.
The process of working with the data set and developing a predictive model is also a task in statistics. तीन तरह की मशीन predictive और statistical two cultures. चलो यार इसको कल पढ़ते हैं यार, आज बहुत थका हुआ हूँ, अब नहीं हो रहा है मेरे से। तो बाय दोस्तों, कल मिलेंगे।